would like it to be interactive. So if I can see your faces, it will be like really, really helpful. So can we please all just turn on our cameras? So just turn on the cameras. It will be really good if we can all do that. Otherwise, it will be difficult for me to understand whether you are even, we are on the same page or not. It just doesn't get easy if I can't see you. So then out of the, Blue, you'd ask me a question, I would not know where have you been, through this. Okay. So at the start, let me tell you, generally this workshop, the reading workshop, is about 4-5 hours. I'm trying to just squeeze into something. So I'll just touch on to, the pointers that will help you to get started. And then we'll take it from there. I would like to know how many of the mothers who are attending or the fathers who are attending have children, older children, who are still not reading, or non-verbal children. Okay. And how old is your child? 22. 22, and he's not reading at all? Yeah, she's not reading or writing. She's not reading. Okay. Anybody else whose child is like older? Yeah, Chitra? My son is 17. Okay. He's not reading. He's not reading. Okay. Anybody else? Deepa, my son is older, but he reads. He's non-verbal. Because you asked non-verbal also. Yes. But he's reading. But he reads. Yeah. Okay. What level of reading is he on, Abhi? He is at age appropriate and higher level reading. Okay. He types to communicate. Okay. He has good comprehension. But because you asked for non-verbal, that's the only reason I raised my hand. Okay, it was for majorly for non-verbal kids who are still not reading. Okay, then sorry. That's okay. So I will first, I'll just try and talk to you about how our brain, like just a little technical stuff, we'll get rid of it, in the starting. But I really want you all parents to know, how does our brain learn to read? Okay, let me quickly just share this with you. Hang on. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Okay. So I'll just take you right to. Sorry. Not here. Yes. Okay. So now you can see this. Hang on. Yeah. Just a second. I think I'm just. Okay. So you have that picture in front of you, which has an auditory and a visual 2 modules. Can you all see that? Yes, ma'am. Okay. So I'll just quickly tell you, there are 2 modules in the brain, which are the foundation for building our reading circuits. And it is imperative that we all parents understand how does the reading function take place. So in the front of the brain, as you can see, there is an auditory module, which is responsible for all the phonics that we teach our children, the phonemic awareness that we call. In the auditory, there are again 2 rooms or 2 sub-components, if we say technically, but 2 rooms basically. One is for the pronunciation area, wherein we know, suppose cat. So cat word is stored there in one room, and k, a, t, all the letter sounds are stored in the other room. So these are the 2 rooms in the auditory area or the auditory section of our brain. So that is in front. Visual. Now there is another area that's visual, if you can see there on the screen. What is there? That's a visual module. It is responsible for what? Again, 2 things. One is grapheme awareness. So the letters, how the letters are formed, how the first for F letters is formed, how the A letter is formed, how the B letter is formed. That's one. And the other is whole word. So there are 2 rooms.
whole words. So what is cat? If I look at the cat, that's the visual area and the other room. Okay, this is like largely what these two rooms or the two sections of the brain work on. Now, I'm sure you all have noticed that when the child is about 3-4 years of age, they would look at the M of McDonald's and they would know instantly this is McDonald's. Now, how they don't know, they've not heard, they've not seen the M, it's M. They don't know, they can't read McDonald's, but how they're going about is they're accessing the whole shape, McDonald's M shape, and they are kind of making a track from the visual to the pronunciation part, and then they're able to access that information and say it's McDonald's. Some of the children know car, names. They will look at H and they'd say it's a Honda City car, whatever. So now, to prepare the brain for reading, two important modules must be activated: the auditory module and the visual module. So by the time the children learn that spoken words are made up of smaller units or sound, they are developing what awareness? They're developing the phonic awareness. Where are they developing the phonic awareness? In the auditory module. And later, when we introduce them to the writing part, they are developing the graphemic awareness, which is in the visual module, piche of the brain. Now, there are two circuits. Let me show you the other picture. Just hang on. Yes. So phonics versus whole language, that's the whole story. But look at the upper circuit and the lower circuit here. Can you all see? Can we all see the upper circuit and lower circuit picture? Yes, ma'am. Okay. So how does these circuit work? जो directionality होती है ना, कैसे information flow करती है? I'm sorry if it's sounding too technical to you, but अगर ये एक बार you understand ना कैसे काम करता है, you'll be able to make your resources and books and everything accordingly. So directionality कैसे काम करता है कि जो visual module है हमारे back of the brain में, ये auditory module से जुड़ा होता है दो तरह के tracks के साथ, एक upper वाला और एक lower वाला. So reading involves visually हमें perceive करते हैं उस word को in the back of the brain और उसके साथ उस pronunciation को match करते हैं और ऐसे हमारे बच्चे are they read. Can we mute ourselves? Yes. So now the interesting thing comes in. The upper circuit is involved. जो upper circuit आप देख रहे हो, it is involved with decoding or sounding out words. What am I using? I'm using my upper circuit. I'm using my upper circuit. Now, upper circuit कहाँ से start होता है? It begins at the back of the brain, जहाँ पे हमें letter identify करने हैं. हमने C देखा, क देखा, और मुझे उसका sound भी पता है. This C is pronounced as k. So the information is flowing from the back to the front. So k. So after analyzing the letters of the word and their sequence, information जो है मेरे upper circuit से pass on कर रही है. So this is our upper circuit. Now what is lower circuit? ये जब एक बार upper circuit हो जाता है, lower circuit is mostly used for the whole word, जो हम sight words बोलते हैं. Also, when a word has been repeated multiple times and it is going to be stored in our vocabulary bank in the brain, we access it through lower circuit. Cat, मैंने अपने बच्चे को बता दिया cat होता है और ये cat का picture है. Okay, so this is how a cat looks and this is how it is read. Now next time, if we have done it enough, after say 5-6 times, when the child has understood, he would not be using upper circuit for reading. He will be using lower circuit because that information has been stored. That information has been stored in a vocabulary and we all use our lower circuit. You, I, everyone who has enough words in the vocabulary bank, we all use our lower circuit. So, हम लोग ने क्या किया? Once we take a screenshot, the child is taking a screenshot of the word, he knows it is a cat,
it would be stored in the vocabulary. And as we know more words, as the child is exposed to the more words, he would be using, his lower circuit will be strong, and he will be using it to read fluently. Lower circuit is used for context also. Upper circuit is largely used to decode new words. Today, if I give you a French word which you have never seen in your life, you would be using your upper circuit to sound it out. But if I give you any word, say tall, you know what tall is, then you would be using a lower circuit to use it. So this is extremely important, because when we use sight word to teach our children, we are giving them context-based information, but at the same time, it is also important for us to develop upper circuit. Why? Because if we don't develop the upper circuit, they would not be able to sound out new words. So people who say that only the sight words are important or only the phonics are important to teach, they are missing this huge point on how the brain is learning to read. We need both the circuits, but lower circuit is definitely used more. But upper circuit is also needed to sound out new words. Now, for the upper circuit, there are analytics. Yes, thoda, deep may I won't go. But even if the child just knows the sounds of the letters, he would be able to use his upper circuit. We don't need to really go deep into synthetic phonics, which is OA, diphthongs and phonemes and all that. We don't need to go deep if the child has, a lot of challenges, which most of our children have. So any questions like about this so far? Just about this. Okay, I'm hoping that you've understood this. All right. एक पेरेंट का सवाल ये है कि क्या ये प्रेजेंटेशन शेयर भी I'm sorry. एक पेरेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि क्या ये प्रेजेंटेशन बाद में शेयर भी होगा क्या उनसे? So I am doing it with Naidisha. I think I have given them the authority to record it. I'm not sure if it's up to Yan. We are recording this session. We are recording. Okay. So as you can see, this, hang on. Okay. So let's quickly go to the reading part now. We have done this. We have quickly done this. We can leave this right now. So how should we generally start teaching reading? When we are going through the phonics method, the child is not interested because it's not something that is of interest to the child. Bob, is, doing, skating, whatever. So who is Bob? The child is not interested. Also the sounds, because our children have a lot of hearing challenges, a lot of sounds they mix up, which is why after extensive research and evidence, including the Doman method, IAHB, NACD, a lot of these prominent institutions that have gone into extensive reading research recommend that we start with sight words and only teach them about 50 sight words before getting into the phonics learning. So if the child has about 50 sight words vocabulary, we can start with the phonics and then simultaneously go into it. What is going through the heart and teaching to the brain? I'll tell you. So this is kind of a small tip for educators or also for parents. You can read it. See, a lot of times why our children don't read age appropriate level is because we keep waiting.
वी कीप वेटिंग कि अभी उसने ABCD किया है, फिर वो अभी हम उसे कैट डॉग 3 वर्ड CVC वर्ड सिखाएंगे, फिर CVCC वर्ड सिखाएंगे, फिर उसको अपना नाम या द वे हायरार्किकल तरीके से हम उसे पढ़ना सिखाएंगे, एंड देन वी विल गो फ्रॉम A to B. Reading for our children doesn't work like that. There is no one linear process that we have to follow. Which is why even 13-14 साल के हमारे बहुत सारे बच्चे अभी भी सिंपल सेंटेंसेस दिस इज अ बॉय और दिस इज अ गर्ल पे अटके हुए हैं, बिकॉज हम लोग ने उसी तरह से पढ़ाना चाहते हैं जैसा हमने पढ़ा है, which doesn't work in case of our children. So ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कब पढ़ाना चाहिए. पहले तो हमें तब पढ़ाना चाहिए when the child is not hungry, tired or in a bad mood, and when you are also not hungry, tired or in a bad mood. Okay, I've just told you can read. Why do sight words come first? So you can read it, I don't have to read. जिनके बच्चे अभी 7-8 years के हैं, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा व्हेन यू आर टीचिंग देम अ वर्ड, से क एट, आई एम टेकिंग दिस कैट एग्जांपल अ लॉट जस्ट सो दैट हम उसके एक ही चीज से हम सारा समझ पाए. क they'll read, a they'll read, by the time they'll come to t they'll forget k, because they have a poor short term working memory. They can't keep a lot of information in that working memory, which is why उनका by the time वो third या fourth word पे आते हैं, they'll forget the first word, first sound. That's why the sight words come first. What do we give them with the sight word? One, we are strengthening their lower circuit, and also we giving them confidence. I'm sure आप लोगों में से जो लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, उन्होंने सुना होगा डॉल्च लिस्ट के बारे में. कोई मुझे एक सेकेंड, 1-2 लोग म्यूट हटा के बता सकते हैं कि आप लोग डॉल्च लिस्ट के बारे में जानते हैं, सो दैट आई कैन मूव ऑन, या फिर शुड आई टेल यू अबाउट डॉल्च लिस्ट? Ma'am, I don't know, ma'am. I have not heard this word at all. Okay. So DOLCH, you can write and search for it, Dolch word list. Dolch list basically 220 words की एक लिस्ट है, 220 वर्ड्स लिस्ट है, जिसपे 40 करके प्री प्राइमर लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये 5 लिस्ट हैं उसमें. और ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होते हैं. ऑफ, अबाउट, द, एंड, लाइक, ऑल ऑफ दोज वर्ड्स जो हमें लगता है यूज के नहीं हैं. अगर आपका बच्चा ये 220 वर्ड्स बोल पाता है, रीड कर पाता है, आप जानते हैं किसी भी चिल्ड्रन लिटरेचर बुक का अबाउट 55% वो बच्चा रीड कर पाता है, 55%. तो अभी वो इतने वर्ड्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, ओनली विद 45%, विच वी आर ऑल्सो डूइंग विद द फोनिक्स टीचिंग. सो अगर आप अपने बच्चे को साथ में साइट वर्ड्स और साथ में फोनिक्स का कराते हैं, देन आप उनकी कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. क्योंकि मुझे दिस मुझे पता है एक हाई, इसको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड बोलते हैं. सो दिस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, इस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, अ इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड. अब अगर मैंने लिखा स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन कैसा वर्ड है? ये एक हाई इंटरेस्ट वर्ड है. हाई इंटरेस्ट वर्ड्स कौन से होते हैं? हाई इंटरेस्ट वर्ड्स वो होते हैं जो आपके बच्चे को बहुत पसंद होते हैं. मम्मा पापा इज अ हाई इंटरेस्ट वर्ड. बार्बी डॉल इज अ हाई इंटरेस्ट वर्ड. एल्सा आना, फ्रोजन मूवी इज अ हाई इंटरेस्ट वर्ड. स्पाइडरमैन इज अ हाई इंटरेस्ट वर्ड. हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, हम ध्यान ही नहीं देते कि क्या एक 15 साल के लड़के को या एक 20 साल के लड़के को मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें राम प्ले विद बॉल, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट. उसको अपनी एज के अप्रोप्रिएट कंटेंट चाहिए. If I talk to him about Tiger Shroff, if I talk to him about a film, and how am I going to do that? I'm going to create the material for him, which we'll talk about later. So sight words कौन से होते हैं? वो वही words होते हैं जो high interest और high frequency दोनों से मिलके बनते हैं. ये फास्ट फ्लैश एक टेक्निक होती है जो हम लोग रेकमेंड करते हैं टू टीच वर्ड्स.
ये आप देख सकते हैं. मैं जनरली आई शेयर इट इन माय वर्कशॉप्स, बट किस तरह से हम फास्ट फ्लैश टेक्निक को यूज कर सकते हैं. इट इज रेकमेंडेड बाय डोमन, इट इज रेकमेंडेड बाय ऑल द लीडिंग रीडिंग स्पेशलिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमें किस तरह के कार्ड्स बनाने होते हैं और 5 के ग्रुप में बनाने और उनको सिखाना होता है हमें. मैं आपको टेक्निक तो अभी नहीं करके नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज ऊपर बहुत हम लंबे उसमें चले जाएंगे. बट इस तरह से हमें कार्ड्स बनाने होते हैं. सैंस सेरिफ फॉन्ट लेना होता है. अपने बच्चों के लिए कोई भी आप चीज लिखते हैं या बनाते हैं, कहीं भी उसमें आर्टिस्टिक कुछ मत कीजिए. डोंट मेक अ टेल ऑफ अ टी और ए का. इट इज डिफिकल्ट. हमें क्या करना है, उनके ब्रेन के लिए इजी बनाना है उस राइटिंग को. सो ब्लैक ऑन वाइट, simple words. Font is either Arial or Verdana or Tahoma, which is a sans serif font. Serif कुछ उसमें डिजाइन नहीं है. So this is our fast flash thing. High frequency words को सिखाने के लिए जो मैंने डॉच लिस्ट बताई है, तो अबाउट को सिखाने के लिए या हियर को सिखाने के लिए या फिर दिस को सिखाने के लिए मुझे क्या करना है, उसको जोड़ देना है हाई इंटरेस्ट वर्ड्स के साथ. तो अगर मैं अपने एक छोटे बच्चे को, से 10 इयर्स का मेरा बच्चा है, अभी तक रीड नहीं करता है, इफ आई एम मेकिंग अ फ्लैश कार्ड्स फॉर हिम, तो मुझे 5 फ्लैश कार्ड्स हम बोलते हैं एक साथ में होना चाहिए. So what I will do is this and is, these two I will take from high frequency list, और 3 में उसके इंटरेस्ट के वर्ड्स लूंगी. स्पाइडरमैन से डोर whatever, He-Man और X-Men और आयरन मैन. सपोज उसको सुपर हीरोज में पसंद है, तो अभी मैंने 5 कार्ड्स कौन से बनाए. दिस इज स्पाइडरमैन, X-Men, He-Man. The child is very interested. Now I can make a small book out of it. Okay, let's go. Okay, now older children की जो हम लोग बात कर रहे थे कि how do we teach older children to read. एक सेकेंड, let's. older children के लिए भी कॉन्सेप्ट यही रहता है. we start with about 50 sight words. उनके साथ हम स्टार्ट करते हैं. then we go on. सिर्फ एक चीज हमें चेंज करना होता है, which is the content. So for a 6-year-old or a 5-year-old, if I'll take ball and mama and papa and park and lion and tiger, for a 13-14-year-old, for an 18-year-old, my content would be very different. It would be films, it would be sports, it would be superheroes, it would be going out, things like that. So you will have to create that content which appeals to the interest of the older child. Now, a lot of times parents think that non-verbal children cannot also read, which one of the parent has also said that even the child is non-verbal, he or she is able to read, which is the truth. I think a lot of times we don't even try. And I'm going to show you one video hang on, I'll just show you that. I'm going to show you a video of a girl which has the speech apraxia, which is a medical issue, and how with reading you can help your child read. And also then I'm going to show you a video of a child who's completely non-verbal, but how you're able to teach him and then see the progress. Okay, just give me a second. So this is the girl, and this girl has apraxia, and this is her normally, like this is her talking. Just see the talking. What did you do in school today? What did you do in school today? What? Huh? Oh, you did good. Yeah. Well, what did... Okay, so this is her talking. Now let's see her reading. See Good job. me play. Very good. I play and jump. So did you see the difference? So when you're teaching your child to read, you're also helping them speak better. Okay, let me just show you.
another way we could build sentences. I'll use Elizabeth's non-verbal gonna and go on use the sign language. build a sentence. Elizabeth swims with Nemo and his friends. So let's put the cards out. Here we go. All right. All of them ready? Okay. All right. Here we go. Okay. Elizabeth. Good job. Swims. Good job. With. Where's with? Good. Good. Nemo. And his friends. Good job, Elizabeth. Good job. So let's read. Elizabeth swims. Good signing with Nemo. And his friends. Very good, Elizabeth. Awesome. Okay. So this is again a testing technique of children who are not able to speak. So you're going to teach them the same way. This is how you can video them by testing them. Those who are only signing. Okay. Now let me just go back to our older presentation. I'm just quickly going to show you some of the samples of the books you can. So this is one of the book that is available in the market. If you can see, this is one of the book. Now what you as a parent can do is you can modify those books based on the interest of your child and also the level and capability of your child. Look at this. The whole context is Bert loves pigeons and pigeons love to coo. Can you guess who Elmo loves? Elmo loves you. Look at this. This is a modified trade book जो market में मिलती है हमें. Tell you. Yeah, some more samples and then we are done. Okay. For older girls, जो बच्चियां 15-16 years old हैं, for them like a Merida. Okay. All right. So Merida is a Disney film. And there are books based on that. So the girls who are 15-16 years old or 13 or 17 or 20, they find it very fascinating. So you can make them watch the film and then change the book or the vocabulary according to their level. So look at this. If it is too difficult, then what we are doing is we are changing it. और एक और चीज ध्यान से आप सब देखिए, यहाँ पर gray color है of the text and here it's black. And there are two spaces in between the words so that it is easier for her brain to read and understand, to read easily. We are making it as easy for the brain as we can. Look at this. This is again one of the, Jungle Book की जो story है, उसकी book है, Disney की ये book है. Look at the text on before. Black है dark green के ऊपर, which is very difficult. If you'll give this to a child, वो बहुत डिसइंटरेस्ट हो जाएगा बिकॉज एक तो आईज पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है एंड ऊपर से बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मॉडिफाई दिस बाय स्टिकिंग अ पेपर एंड टेकिंग प्रिंट उसको करके हम उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं. इसका पूरा प्रोसेस है, हाउ डू वी गो अबाउट इट, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है. वो मैं जनरली उस पर डिस्कशन अगेन दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई उनके बच्चों के इंटरेस्ट की बुक. ये वाली दिस इज अगेन सो लाइक अ स्पाइडरमैन बुक. आई ऑलवेज से सुपरमैन बुक फॉर द बॉयज हु आर ओल्डर. यू कैन बाय दीज बुक्स एंड क्रिएट योर ओन बुक्स विच इज ऑफ द लेवल ऑफ द चाइल्ड. Yeah, so this is what we have done. And any questions so far about this? Yes, Beena. What actually, so if we buy the book, then we have to stick a paper on this and it can be done because the lengthy procedure, it's difficult for us to proceed for the same.
it's not a lengthy process once you understand how it needs to be done, because you won't just ऐसे random words हम नहीं लिख रहे हैं. नहीं There is हाँ, मैं क्या हाँ. करती हूँ, usually I do the same thing. The story I just convert into a simpler form and just stick it over the story which is there, which my child is not able to read. So is it okay? So we can do more of it? No, generally हम जो recommended होता है वो ये होता है कि आप high frequency और high interest words का proportion साथ में लेके रखिए. Okay. If the child is in a आपका बच्चा कौन से लेवल में फॉल करता है डॉल्च लिस्ट के, तो अगर वो प्री प्राइमर पे है तो मैं प्री प्राइमर की कोशिश करूंगी उस बुक पे, इफ आई एम यूजिंग से 20% ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट हाई फ्रीक्वेंसी और बाकी ऑफ हाई इंटरेस्ट. तो वो लेवल मेरा कहाँ पे बच्चा फॉल कर रहा है, हम मैंने वही बताया ना, मैं ऐसे रैंडम नहीं करेंगे. एक तो पिक्चर पे हम ध्यान देंगे और ऊपर से हम उसका भी प्रपोर्शन होता है. So if the child is not very interested, then we use 80-20 ratio. So 80% of the high interest word, 20% of the high frequency word. Yes. So this is like a pura process, and then you stick it, and then उसके साथ हम काम करते हैं. हम थोड़ा बहुत लेट चल रहे हैं. Okay. मैं अभी comprehension पे थोड़ा I'll talk, and then we'll have question answers. Okay. Yeah. I'll just talk about the comprehension. So before I show you some of the sheets about comprehension, मैं एक चीज सभी हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल है ना? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके. या सो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में मैं 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ ना, दैट इफ योर चाइल्ड इज 20, इफ योर चाइल्ड इज 15, इफ योर चाइल्ड इज 9, इफ योर चाइल्ड इज 7, don't treat them as little kids who don't understand. Even if you think they don't, बच्चों का रिसेप्शन काफी स्ट्रांग होता है, and the kind of inputs that you give them will decide on what the output is going to be. आप बच्चे से 1 word question पूछो, 1 word ही आंसर देगा. आप रोटी खाओगे कि पराठा खाओगे, तो he'll say रोटी या पराठा, he'll say 1 word. But when you equip them with a lot of information, with an age appropriate information, talk to them, ask them open-ended question, expose them to the social situations. That's when you are strengthening their their brain and their information input. आपके बच्चों को क्या सबको ये पता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 तरह की वैक्सीन है इंडिया में, कि हमें अगर कोवैक्सीन लगेगी तो अरे अभी उसका WHO का वो आया नहीं है, 18 इयर्स के ऊपर लग रही है, एंड देन कोविड का सेकेंड वेव तो खत्म हुआ, अभी थर्ड वेव. These are very relevant information, and when your some neighbors come, your friends come, other families come, the child should not feel कि वो conversation हो रही है पर मुझे नहीं पता what are they talking about. Make them part of the communication and conversation in the house. Even if you're not getting a response, give them input. Talk to them. Should we go to the mall or should we go to Masi's house? What do you think? If we go to the Masi's house, then what are we going to do? What do you think? Think is the word, and that's the whole reason I designed this program. I can think. When you're talking to your child, use this word. What do you think we should order? What do you think is going to happen? Where do you think we should go? हम लोग इस word को अपने बच्चे के context में use ही नहीं करते, because हम somewhere we feel that he is not able. अरे वो तो नहीं, उसको नहीं पता, तुम हम decide कर लेते हैं. So first we have to get rid of this. And दूसरी चीज जो बहुत मुझे तंग करती है वो ये है कि हम लोग ने एक word सीख लिया कि हमारे बच्चे visual learners होते हैं. हमें शुरू में बता दिया गया हमारे बच्चे विजुअल लर्नर्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ विजुअल पे काम करेंगे. मुझे जिम वाले ने बताया कि आपके थाई मसल स्ट्रांग है, तो अभी मैं सिर्फ अपनी थाइस पे काम करूंगी, सिर्फ उनको और स्ट्रांग बनाऊंगी. सी आई नो दे लर्न विजुअली, वो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं, उनको जल्दी समझ में आता है अगर हम विजुअली उनको सिखाते हैं, वो ठीक है, दैट इज वन थिंग. बट ऑडिटरीली पे काम करना जरूरी है. जब मेरा बच्चा बाहर जा रहा है और नेबर्स के साथ बात कर रहा है, वो उसको फ्लैश कार्ड या पिक्चर बुक करके नहीं सिखाएंगे ना, वो तो the word talks in words. They are going to talk to him through words. वो strengthen उनका करना बहुत बहुत जरूरी है. तो आप जब उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, जब आप उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं,
सिंपली है, रेन हो रही है, आपने क्या आपके बच्चे को आपने बताया है कि ड्रिजलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, रेनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, और पोरिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है. दीज आर 3 different things within the same weather. What do you think what do you think is going to happen? I can see black clouds. What do you think is going to happen? I think it's going to rain, Mama. No, I don't think it's going to rain. I think it's going to just drizzle a little. What do you think is going to happen when it rains? Talk. Expose them to vocabulary. आप छोटी छोटी चीजें ले सकते हो. आपने वेदर की थोड़ी वोकैबुलरी ले ली, आपने एनिमल्स की थोड़ी वोकैबुलरी ले ली. टॉक अबाउट ज्योग्राफी, कॉन्टेक्स्ट. ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट दो उन्हें. So I'll show you quick, a few. Hang on, I'll show you. Okay. So this is something you can start. Look at this. One of your friends have a birthday party on Saturday. What would you do to surprise her? What will visualization हमारे सभी बच्चों का काफी वीक होता है. Visualization is an abstract, no? हम कुछ imagine करने को बोल रहे हैं तो बड़ा abstract concept है, which is why maths में lot of our kids struggle. हमें क्या करना है, उस visualization और imagination को strong करना है by giving them different scenarios. Have you ever talked about it? Abhi to of course they're not going to school, but if Papa, Mama don't come to pick you up after the school, what do you think you're going to do? If you are in the bathroom and light went off, what will you do? A lot of children will say, I'll get scared, because that's also vocabulary. I'll get scared, I will call Mama, I will close my eyes. These are all very appropriate responses. But have you even exposed them to this situation? So let them think. If you don't have an umbrella, what will you do? Now look at this. So these are again, some sort of thinking. I'm going to show you a few more. Look at this. You can talk about, these real and fantasy. What is real and what is fantasy? Some of the children think the dinosaurs are still real and talking monkey is real. So what is real and what is not real? So what you can create some pictures and ask them, ये real है कि fantasy है? Is it real or fantasy? Real or fantasy? Real or fantasy? See. And once given, okay, are you able to see? Sorry, were you able to see? No, I was just going through scrolling. Okay, sorry. So these are, now you can see? Yes, ma'am. So show something like this and ask them, real or fantasy? Real or fantasy? Is it real? So you've given them a vocabulary. Fantasy क्या होता है? उनको तुमने एक बार बताया and then simply just showing them. Is this real? Or a fantasy? You given them the word. Now every time they're seeing a cartoon film, they're seeing these dinosaurs, you can always talk. It's not, is it real or fantasy? So some of these concepts can be developed through a lot of exposure and through creating a lot of these similar worksheets. Let me just quickly show you one or two more, and then okay, so like this. I'll show you. Look at this. So what is Mama saying? What will Mama say? Now, we can do this with all age of children, all age children, and depending, vocabulary. So somebody with a 10, 12-year-old child would be able to say ki Mama is saying, put the toys in the box, put the books in the cupboard, and put the clothes in the laundry. And, and depending if the child is like younger, they can always say, Mama is saying, Mama is angry, room is dirty, clean your room.
So similar, different kind of what will they say? What is going to happen? Sort of things are we can show. Ek or I can show you. Hang on, let's just check. हाँ, this one more I show. Because there बहुत सारे ना, there is no. Look at this one. Can we all unmute? Sorry, mute, please. Okay. So what are they thinking? What is Mama thinking? I need to go. I need to do some exercise. What should I make in the dinner? I want. When I was doing this, when one of my batch, एक बच्ची बोलती है कि मैंने बोला मम्मा क्या सोच रही है? She's like, Mama is thinking I also want to go and play football because always बच्चे plays. So I want to play football, and it was totally an appropriate response. I'm okay with it. We don't have to tell them सिर्फ right or wrong. Don't say कि ये ऐसा ये गलत है और ये सही है. Whatever you can think about is right. Giving them a lot of options, open-ended thinking. What is this girl thinking? तीनों answers ठीक हैं. What they pick, they should be able to feel good about it, okay about it. So look at it. Okay, I'll show one last think sheet. There are like hundreds. Maybe just choose one more. This is the last one I'll show, and then. So why is the baby crying? So now we don't have one reason. You can't just say why the baby is hungry. So baby is hungry, baby is thirsty, baby is sleepy, baby is crying because mama is going to work. ऐसा भी answer आता है. उसको headache. This girl, why is she holding her head? Why are they happy? So these lot of whys. Yeah, ma'am. Actually, these PPT is very useful. Can we get it, ma'am? What? I'm sorry. Okay. Now I'm just stopping the my presentation, and if you have any questions, then we can take questions. Very nice information, ma'am. Thank you so much. Thank you. I'm glad you liked it. I hope it'll help you. Hello, ma'am. This is Riddhi. Yes, Riddhi. Can you hear? Yes, I can hear you. Hello. Yes, I can hear you. Okay, ma'am. I have one question. Like, my child is 9 years old. She's a girl, and she has a multiple disability, and that she has a hearing impaired child also. My question is, hurdle for me. I don't understand sometimes what she's saying. Her speech clarity is not so good. So I got confused also. I have now a little bit introduced, a little bit phonics, all these things, but I don't know much about these sight word or CBC's words. So I want reading, how to help her in reading, and how to make the things grammatically or basics, all the roots strong. And my second question is, like, due to hearing, I really sometimes don't understand what she is saying. So I also got you. I think Riddhi, can you hear us? Yes, ma'am. Okay, so aapka the last of the second question I couldn't hear, but second question is more pertaining to an OT. I would say you speak to a speech pathologist or speech and language specialist or an OT who they would be able to help you out with either introducing sign language so that yes, they are right, and then also no, they are saying that yeah, she's on 1 or 2 word speech. They are saying due to hearing impaired, she will take a little bit more time to get the things clear. So I am also waiting, but
I want start how Yes, to yes. start reading. I really am very desperate that she should start Yes, reading now. absolutely. So ऐसा नहीं है, children who have hearing challenges cannot read. They can read age appropriate. That's not a problem. Of course, you know, जैसा मैंने बताया ना कि this is generally a very long workshop, but I would also suggest you to get one book, How to Teach Your Baby to Read. It's by Doman, Glenn Doman. वो बहुत अच्छी book है. I think Amazon पे आपको मिल भी जाएगी. तो अगर आप Headset उसको अच्छे से, if you read it, and also there are many good resources. You go to this specialreads.com करके है एक Natalie and I, you know, kind of work together, and then she talks about कि हम कैसे start करें. उसके blogs हैं, and there are hundreds of blogs. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी एकदम से ओशन में जंप करने से अच्छा है पहले थोड़ा तैरना सीख लो. You empower yourself. अपने आप को 15 दिन दो, 20 दिन दो, रोज 2 घंटा रिसर्च करो एंड एक मेक अ लिस्ट कि मुझे अगर साइट वर्ड स्टार्ट करना है तो कौन से साइट वर्ड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. उसके बाद फोनिक्स सिखाना है तो पहले कौन सा, बिकॉज देयर इज अ होल, यू नो, एक पूरा सीक्वेंस है ये. हम ऐसे रैंडम जाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा. तो खुद से अपना एक नोटपैड पे अपना रिसर्च करो थोड़ा उसका. जो मैंने बुक बताया, रीड दैट बुक. इट्स एन एक्सीलेंट बुक एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड रीड इट. तो उसमें काफी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अदरवाइज आई थिंक आई एम गोइंग टू डू माय वर्कशॉप 5th को. हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं हमारी, तो अगर आप उस पे आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. बट आई थिंक देयर आर मेनी रिसोर्सेज व्हिच आर फ्री अवेलेबल. रीच आउट, मेक योर नोट्स एंड अपना मटेरियल बना के देन बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करो. आपने बच्चे को 2 दिन पढ़ाया, 3rd डे आपको नहीं पता कुछ कि मुझे आगे कैसे जाना है. द बच्चा इज डिसइंटरेस्टेड, you don't know what to do, and then you leave it for few months, and next time the child is not interested, right? So I would say empower yourself, read a little. There are many free resources. YouTube पे जाओ, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए. 50 sight words पहले आने चाहिए फोनिक्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले. ये मैं आपको की उसका दे सकती हूँ. Okay, can you please share the name of the book in the chat, because chat box, because I was somewhere outside, so I did not get the name of the book. Very common. So thank you so much. Yes, any other question? Hi, my name is Early. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, my son is 3 years old now. Now, I tried showing him flashcards. Maybe it could be the way that I showed him or something. He is not at all interested in watching those flashcards. Then, even though I continued, he will not show any interest. So, what I did is, in the iPad, using Book Creator app, I created few books. Yes. But he is very much interested in that. Yes. He watches, he responds very well to those. And is that fine, ma'am, or should I go back to the flashcard method itself? Okay, Arlene. Your question has a lot of, things that can be answered. So fast, the flashcard method is, there is a whole sequence to it. The child is not able to follow, then what do? We do 1, we do 2, we do 3, we do 4. Oh, okay. So also, like, what are the words that you're using on those flashcards? As I said, if the child is not interested, we use all 5 high interest words. What is the font size you're using? Generally, for the beginners, like a 3-year-old, we take A4 का जो sheet है, उसको double करके, half पे we take इतना बड़ा, like 3 inches. Okay. And in red, always in red. When we're using the flashcards, the word, the font is sans serif. It's in red, and the words are of interest to the child. Okay. Initially, okay, and then gradually, what we do when and then 5 in a group of 5. You can't have 10 words. Flash. Then how you're sitting? You're not supposed to sit. बच्चे के साथ, you are supposed to sit across the child. So there are like 10-15 things on how to go about it when you're showing the flashcards. Actually, ma'am, what I did was the font size. I was writing on the card and I used that should not. I always say only write if you are a calligraphy professional.
Okay. Okay. Otherwise, don't do that. Even if we have a good handwriting, a lot of times हम A बनाएंगे, 4 cards में 4 different तरह के A बनाएंगे, and that is difficult for the child to comprehend. So always take a printout. Okay. Okay. So initially you do 5-0, you do suppose all 5 high interest words. Then you do 4-1, 4 high interest, 1 high frequency. Then you do 3-2, depending where your child is at. Okay. So there are a lot of tiny little things to how do we go about the flashcards. And Story Creator is a great app. You can kind of do flashcard, Story Creator, flashcard. That sequence. Okay. So, the iPad thing, will it have a good impact on him later on for reading? It's okay, but also do the pages, the book thing. Screen again, with our children have already, vision issues. So you can use it, but that should not be the only thing that you're using. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Radhika, I think you had a question. Hello, ma'am. Yeah. Hi. So I want to ask you, if we adopt the Glenn-Dorman reading method, so should we do it completely, or we should take some part of Glenn-Dorman then move to phonics? Because Glenn-Dorman is only about flashcards, and I think they start with 3 letters and then moving on to 4, 5. No, so I'll tell you. Dorman talks about, and in Dorman you don't need the phonics. But if you have been with me from the beginning of the this presentation, I always say we have to make a balance, because we have to strengthen both the circuits, the higher circuit and the lower circuit. The lower circuit is about sight words and a lot of contextual based information. That's lower circuit. The higher circuit is for phonics, so that we can read out and decode new words. I would say take little bit of here and little bit of there. Start with 50 sight words. Once the child has a vocabulary of 50 sight words, go to phonics. But if the child, depending on the disability of the child, depending on where the child is at, then you would decide how much phonics you would want to teach. आप बहुत सारा phonics में नहीं घुस सकते हो if the child has challenges, maybe speech issues, वो per ब का difference ही नहीं समझ पा रहा है. So what then you can do is, सिर्फ हमने analytic phonic किया, जिसमें उसको सिर्फ sounds हमने बता दिया, तो साथ में हम लोग reading के साथ ये high frequency, high interest words कर रहे हैं. So you can't take one thing completely. You can't go just jolly phonics. मैंने jolly phonics ले लिया और मैं सिर्फ वही सिखाऊंगी. The child may not be interested. So is there any method or any institution where I can, get him assessed or get the knowledge, because it is too confusing. Whenever you go to an educator, they all have their own methods. Some say to start with capital letters along with small. Some say phonics. Then there is Glenn-Dorman method, which I have seen. I was in a center in Chandigarh, and they have this method of reading, because now you are saying that, okay, something of phonics also, and some part of Glenn-Dorman method. So it's really, really confusing as a parent, because preparing material, then getting the child to sit with you, do the activity is really tiring. Come to the workshop. I hope I can take that. Sure. Yeah, please. Because, so again, I'm sorry, what's your name? Divya. Divya, ये चैलेंज हमेशा रहता है हम मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये हमेशा रहता है. मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, जिस भी प्रोग्राम को आप फॉलो करते हो ना, उसको पूरे ट्रस्ट के साथ करना चाहिए. ओके. जिसको भी आप करते हो उसको पूरे ट्रस्ट के साथ करना चाहिए. there are programs like these हैंडराइटिंग विदाउट टीयर्स के प्रोग्राम्स हैं, या फिर डोमन के प्रोग्राम्स हैं, या फिर उसी के अंदर बहुत सारे ब्रिल बेबी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. आई वुड से अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने में, देन अपने आप को एम्पावर करो. 1 महीना अपने आप के ऊपर लगाओ, अपना एक फाइल बनाओ, और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगता है ना इम्पोर्टेंट है, उसको पूरा उसके नोट्स बनाओ. मुझे पता है हम सबकी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनालिटी नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ फाउंडेशन, यू नो दैट योर चाइल्ड द बेस्ट,
and every person in the world would have a program that they find the best. So ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहा है या ये गलत कह रहा है या ये गलत कह रहा है. Maybe they have found success with that program, but your child is different. उसको उतना फोनिक्स नहीं समझ में आ रहा है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम बैलेंस, तो you will have to find out ना कि मेरा बच्चा यहाँ पे कहीं पे स्टैंड करता है, तो अभी मैं क्या करूँ. It's not a rocket science, trust me. सिंपल है. हाई बच्चे का इंटरेस्ट देखना है. मेरा बच्चा डोरेमोन में इंटरेस्टेड है. मुझे ये समझ में आ गया था कि सपोज वो डोरेमोन में इंटरेस्टेड है, तो मैंने अब क्या किया, डोरेमोन के मैंने 10 वर्ड ले लिए एंड मैंने साथ में हाई फ्रीक्वेंसी लिस्ट में जाके देखा इनके साथ में कौन से वर्ड्स यूज कर सकती हूँ. व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ बुक आउट ऑफ इट. ओके. और उन्हीं सब वर्ड्स के मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए. उसी वर्ड्स का मैंने स्टोरी क्रिएटर से एक बुक बना दिया. उन्हीं का मैंने उसका वीडियो दिखा दिया. So everything is complementing each other. Okay. The child thinks he's watching Doraemon, but no, वो मैं decide कर रही हूँ कि क्या चल रहा है, क्या exposure जा रहा है. Okay, so I think थोड़ा research करो, थोड़ा understand करो, and information बहुत है. Don't get confused about it. ना इतना कुछ confuse होने का जरूरत नहीं है. Keep working, थोड़ा थोड़ा चलते रहो, you'll reach. Thank you, ma'am. Yeah, sorry, I hope I have answered. Yes. Ma'am, today if I am using 5 sight words, so next day I have to add 5 more. Means I can. See, not एक दिन में हम 5 sight words use नहीं करते हैं, हम एक बार में करते हैं 5 sight words use. ठीक है. तो अगर आप बच्चे को एक बुक बनाई आपने जिसके अंदर टोटल 13 वर्ड्स हैं सपोज, तो आप 5 वर्ड्स 5 and 3 इस तरह का ग्रुप बनाओगे आप फ्लैश कार्ड्स का. तो आप पहले 5 दिखाओगे, फिर दूसरे वाले 5, फिर वो वाले 3. एक बार में 13 नहीं दिखाएंगे, 5, 5, 3 दिखाएंगे. इस तरह से काम करता है. And ma'am, why red color is we should write in red color? Red is good. Our brain likes red. Our brain likes to see red. हम अगर रेड देखते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, इसीलिए रेड. इनिशियली हमें उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट करना है, इसलिए रेड. जब वो बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम उन्हें हाई इंटरेस्ट चीजें दिखा के उनको अपनी तरफ वो बैठना शुरू कर देंगे, देन ग्रेजुअली विल गो टू ब्लैक, बिकॉज अल्टीमेटली तो उन्हें ब्लैक ऑन व्हाइट पढ़ना है ना बुक्स में, तो देन विल टेक देम टू ब्लैक. नाउ इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का डिजाइन, साइज ऑफ द फ्लैश कार्ड, एवरीथिंग मैटर्स. And font should be in capital letters or small letters? No, never in capital letters. Only जो proper nouns होंगे वो capital में होंगे. Otherwise it's capital में उसका first letter होगा. Everything else should be in small letter. किताब कैसा पढ़ते हैं, आपका एक गाइडलाइन होना चाहिए. How is your child going to read? बुक में वो कैसे रीड करने वाला है, वो वैसा ही फ्लैश कार्ड बनेगा. Okay, I think we're done. Hi Suhani, hello. Hi Deepa, I'm so sorry I joined in late. I hope everything is all right. Yeah. There are a couple of questions in the chat box. If we can quickly take that up before we conclude, is that possible? Okay, we can take 1 or 2. Yeah. Radhika is asking, when we teach sight words and some words come with same initial sound, then what should we do? She's confused. Example, play and park. I would not put them in the same group. You mean same set of 5 flashcards? I would not put them in the same card if the child is getting confused. All right. I will put them in a different groups. And anyways, play is a high frequency word. So you probably would use it in the very beginning when you're starting to teach. Park you can do a little later, even if a week's difference would do. All right. Radhika, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem. All right. And just this last one, Sweetie is asking that she has a 7-year-old daughter who can speak. She can speak alphabet and counting, but she cannot identify it. How can we help her? What she can't identify? She cannot, I think what she's trying to say, she can't identify the written. She can say A, but when there is A written, Sweetie, you want to give us some clarity? Yes, ma'am. She can read alphabets A, B, C, D, but whenever I try to write down and just read the book, she don't know where's the A, where's the B.
When did you introduce reading to her? Actually, ma'am, she always is starting to like a poem by a television and a phone. She always hearing this A B C D and 1 2 3. So she know A B C D and 1 2 3 A E, but she don't know how to write and where's the A, where's the B. She don't know. It's a little sweetie. Why do you want her to know like ABC? आप कहाँ पूछ रहे हो उसको? बुक में दिखा के पूछ रहे हो A बताओ B बताओ? यस मैम, बुक में या जैसे फ्लैश कार्ड है बना हुआ, उस फ्लैश कार्ड में दिखा के पूछती हूँ, या मैं उसको स्प्रेड कर देती हूँ कि आप बताओ इसमें ए कहाँ है, जो आपने अभी फोन में देखा था, आपको पता है ए कहाँ है? तो कंफ्यूज हो जाती है मैम, मम्मा। Don't do that. You're testing the child too much. Don't do that. Everyone, teaching and testing. Yes. थोड़ा हम लोग born teachers हैं, सब Indians हम born teachers होते हैं, but it's definitely something that we need to restrain ourselves. जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तो उसको सिर्फ पढ़ा रहे हो। स्वीटी, आप उसको टेस्ट कर रहे हो। अगर वो उसको ये लग रहा है ना कि आप पूरा टाइम उसको सिर्फ टेस्ट ही करे जा रहे हो, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगी ना। Why would she answer you? She is not interested. तुम उससे बार बार पूछ रहे हो ए बताओ बी बताओ, उसको सिर्फ अभी पढ़ाओ। और एनीवेज आप उसको ए और बी, मैंने अब जैसा बताया आपको, साइट वर्ड्स अभी 50 साइट वर्ड्स उसको सिखाओ। और फोन में एबीसीडी मत बताओ प्लीज। ओके, टेक अवे द फोन, और स्पेशली फॉर ये एबीसीडी वाले साइट वर्ड सिखाओ, फोनिक्स सिखाओ उसको, और लिखना भी सिखाओ, पर हर टाइम उसको टेस्ट मत करो। दूसरी चीज, प्लीज उसका आई टेस्ट कराओ। इज शी इवन एबल टू सी व्हाट यू आर शोइंग टू हर? उसका आईज कब टेस्ट हुआ था लास्ट? मैम अभी लास्ट वीक कराया था। उसका आई सेट थोड़ा वीक है, बट उसका पास का ठीक है, दूर में थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता है, दूर से देखने में। हाँ, तो हमारे बच्चों का ना एक और चीज बताती हूँ स्वीटी, सबसे ज्यादा होता है फियर ऑफ फेलियर। हमारे बच्चे बहुत डरते हैं फेलियर से। अगर उनको ये लगेगा कि मुझे नहीं आता है, वो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे उसको करना। और एज पेरेंट्स इट इज आवर ड्यूटी टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। मैं उसको अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना बच्चे को, इनिशियली अगर मुझे पता उसका कॉन्फिडेंस डाउन है या वो नहीं जवाब देता, मैं कैसे क्वेश्चन उसको पूछूंगी? बिल्कुल ऐसा रिडिकुलस चॉइसेस वाले। मैं उसको पूछूंगी कि एलिफेंट कहाँ पे रहता है? एलिफेंट क्या नेस्ट में रहता है कि जंगल में रहता है? या फिर और भी रिडिकुलस चॉइस, एलिफेंट ओशन में रहता है कि जंगल में रहता है? इतना इजी चॉइस होना चाहिए। I think the child, when you're teaching him, you're testing him her a lot, and I can see that only. तो थोड़े दिन के लिए टेस्ट करना छोड़ दो, 2-3 हफ्ता, और उसके बाद उसको पूछना, मुझे लगता है वो बता देगी। उसको क्या है, वो लिख भी लेती है, मतलब कॉपी पे लिख देगी। वो लोग कैसे, आपको अल्फाबेट्स मैम ने होमवर्क दिया है, आप कर लेना, तो वो अपने आप बुक्स निकाल के A to Z फिनिश कर देगी। बट जैसे एग्जाम है चल रहा है अभी, तो मैम पूछती है कसक इसमें आपको बताना ए लिखा कहाँ है और सी कहाँ लिखा है, तो नहीं पता होता है। तो दैट्स व्हाई मुझे कहा मैं पूछूं एक बार, मैं इसको किस तरह से करूं हेल्प के, ताकि वो पहचान सके कहाँ पे क्या है। आप ना एक तो इसमें स्वीटी, एक तो इसमें डेफिनेटली आपको मुझे लगता है ओटी भी थोड़ा हेल्प कर सकता है। ए और सी काफी सिमिलर वो लेटर्स होते हैं। आप सैंड पेपर पे ट्राई कर सकते हो, ये थोड़ा राइटिंग वाला है। आप अगर सैंड पेपर पे ट्राई कर सकते हो बच्चे के साथ उसको बनवाना, ए और सी। आप अभी आप बोल रहे हो कि वो लिखती है, मुझे नहीं पता वो खुद अपनी मेमोरी से लिख रही है कि सिर्फ कॉपी करके लिख रही है। कॉपी करना मैम उसको आता नहीं है। नॉर्मली कहते हैं चाइल्ड को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है, बट सामने कुछ चीज रख दो कि आप इससे देखकर नोट डाउन करो, तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो अभी जो ABCD वो लिख रही है, वो अपनी रिकॉल करके, उसको याद है वो लिख रही है। हाँ, क्योंकि वो स्कूल जाती, तो मैम इसको, अभी तो स्कूल बंद है, बट पहले जा रही थी तो स्कूल में उसको सिखाया गया था, तो अभी तक उसको याद है, तो वो लिख लेती है। तो उसको तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमने शुरुआत में अपनी जब हमने हाउ द ब्रेन लर्न्स टू रीड हमने जब बात किया था ना, तो जो अपर सर्किट है ना, बेसिकली पीछे वाला विजुअल, आगे वाले ऑडिटरी से बात नहीं कर रहा है। ओके, लिखना तो आ गया, बट वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि ये साउंड कौन सा है। ओके ओके, तो आपको ये फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसके साथ थोड़ा सा। ये ए है, ये ब है, और मुझे नहीं पता आप ABC, जब हम ABC करते हैं ना, ABC इज बड़ा वाला ABC,
छोटे वाले को हम ABC नहीं बोलते, छोटे वाला फोनिक साउंड के लिए यूज होता है, तो वो हमेशा ए, ब और क होता है, बड़े वाला A, B और C होता है। तो आप थोड़ा ये चीजें ना उसको ठीक करो, और मुझे नहीं पता हाउ यू आर टीचिंग, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। Okay, ma'am. Okay, Yeah, Thank you. I think Amrita also has a question, but we are running late. Okay, now let's take the last question. Yeah, last one, guys. Okay, Amrita, go ahead. You'll have to unmute yourself, Amrita. Yeah. हेलो मैम। मैम मेरा बेबी 4 इयर्स का है और उसके साथ जस्ट उल्टा है, और वो सारे रिकग्नाइज करता है, अल्फ़ाबेट्स, बर्ड्स नेम और सारी चीज़ें उसको पता है, क्लाउड है, बहुत सी चीज़ें देखता भी है, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम है उसको। मैंने उसको डॉटेड से लिखना सिखाया, तो वो खुद से जब कहीं लिखना होता है तो वो डॉट बनाता है सिर्फ ए के लिए, और ए में ही वो राइट करता है। और बाकी चीज़ें जैसे मैंने कोशिश करी सैंड पे, जैसे आपने बताया कि सैंड पे उसको लिखना सिखाओ, मैंने भी यही कोशिश करी कि सैंड पे लिखना सिखाऊं, बट ज़्यादातर वो ENW ये सारे वर्ड्स उल्टा लिखता है। और एक प्लस पॉइंट मैंने जो इधर उसको नोटिस किया कि उसने E के 3 लेटर्स में W दिखाया मुझे, फिर M दिखाया मुझे, और ये सारी चीज़ें करता है, बट मुझे ये प्रॉब्लम दिखती है कि लिखना अभी उसके प्रोसेस में नहीं आया है। अभी वो बहुत छोटा भी है अमृता, अगर मैं बोलूँ तो राइटिंग जो तुम अब बता रहे हो ना, अभी वो चल रहा है, इट्स अ फेज। ऑल्सो मिरर जो वर्ड बच्चे करते हैं ना, मिररिंग, वो एक फेज होता है। ये ऐसा नहीं है कि आज वो मिरर कर रहा है तो बाद में भी करेगा, इट्स अ फेज, एंड जनरली वो खुद से फेड होता है, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं ये आप में अगर आप हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स ऐसा सर्च करोगे तो उनका एक पूरा प्रोग्राम है। आई वुड नॉट से कि आप उसको बाय करो या कुछ करो, पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ राइटिंग के ना आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे एक सर्टेन तरह से हम सिखाते हैं। जैसे कि एक बॉक्स लिया आपने, तो बॉक्स के लेफ्ट में आपने एक स्माइली बना, तो अभी सब चीज वहीं से स्टार्ट होगी, तो बच्चा कई बार समझ नहीं पाता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो P और B वो कहाँ क्या करेगा, वो इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है। आप उसको अगर एक बॉक्स दे रहे हैं, आपने बॉक्स बना दी और सब पे कॉर्नर में आपने एक डॉट लगा दिया, तो ऑल द वर्ड्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टॉप। सो दिस वुड ऑल्सो हेल्प हिम स्टार्ट द लेटर या वर्ड कहाँ से करना है। दूसरी बात, फॉर्मेशन जो होती है ना, फॉर्मेशन आपको खुद से सीखना पड़ेगा। जैसे हम जब राइटिंग सिखाते हैं तो A, C, G, ये इस तरह के जो भी ये वाले वर्ड्स हैं, ये एक तरह से यूज होते हैं, तो क्या वो उसी तरह से बना रहा है, क्या वो सब A, C, G ये सब किस तरह से फॉर्म कर रहा है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड ओनली सैंड नहीं अमृता, बहुत सारी चीजों पे आपको ट्राई कर सकते हैं। मैं बैठी हूँ, इफ आई वर यू, आई वुड आस्किंग कि मेरे बैक पे लिखो, तो मेरी बैक पे ना कुछ भी लेटर लिखो और मैं सोचूंगी, इट्स अ फन वे। So you write C and then I'll think, अरे नहीं C नहीं था, ये तो D था। And then, so this is what you can do. You can do arm वाला, you know, something writing. Sand के साथ sand paper पे आप कर सकते हो। So ये थोड़ा काइनेस्थेटिक होता है, जब बच्चा सैंड पेपर पे ऐसे लिख रहा है, टैल्कम पाउडर, ट्रे के अंदर टैल्कम पाउडर डाल के यू नो, और ट्राई ग्रुप करो वर्ड्स को ना, लेटर्स को ग्रुप करो, A, C, G, D ये सब एक ही तरह के हैं, तो उनको एक में ग्रुप होगा। ये आपको पिंटरेस्ट पे ना आप ढूंढोगे ना, तो ये लेटर्स का पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा, उसके साथ हो जाएगा। एंड इट्स अ फेज, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, वो यंग है वो आ जाएगा। Ma'am, your webinar will be on 5th, so will you share all the details of it? I'll share it with Suhani. Yeah, Suhani, I'll share it with you. Yes, I'll share it, and Suhani will share it in the Nai Disha. So what I can do is I can share Deepa's upcoming workshop, the details of it, once I have all of your names. Like there are 3 people here in the session. Dimple, Anjali, I don't think we have your phone numbers. Could you please give us that? And also someone's logged in with iPad. Just give us your name so that we can give you the details of Deepa's workshop. Yeah.
Yeah, I'm also interested to know. Yeah, we'll just send it across like globally, universally to whoever has participated, and if they're interested, they can register for it. Right, Deepa? Does that work? Yes, yes. All Absolutely. right. Okay. The session went on a little longer than we thought. But thank you so much. I'm sure our parents appreciate that you took the time out to answer all of their questions. It was an extremely informative one with small little strategies